much does a teacher basically earn on an average? So, you consider yourself as an atheist. Not consider, I am an atheist. You yes. are an atheist. Do you consider your parents as a god, or you respect your parents, right? जब वो गिर जाते तो उन्हें क्यों नहीं छूते ऐसे? ये तो सोचने की बात है. So then I understood, okay, why was that friend student making a face? Because for them, kids can happen before the marriage as well. Of course, because that's biology. Yo, what's up, my friends? Welcome back to ThoughtCast. My name is Aditya Bajaj, and for today, my guest is none other than Indervesh Sir. Indervesh Sir was my own English teacher for 7th and 8th standard, and now he has switched careers and is a translator officer in the Defense Ministry. Okay, so in this episode of ThoughtCast, we've talked about how much does an average teacher earns, how Sir was so passionate about teaching and became a teacher by choice. We've also talked about how Sir is an atheist, and then we've traveled to France and also discussed how Europe has a far different culture than India. So, the super interesting, super engaging, and super nostalgic conversation with Indervesh Sir starts in 3, 2, 1. Okay. Nothing, no, आराम से कोई consciousness, कुछ नहीं, बस हमने कुछ नहीं करना. We just have to catch up. It's been like Okay. 6 or 7 years that we've caught up. It's so great that I feel I'm being trained right now for this upcoming session. It's so good. No, but Yes. last time हम कब in person कब मिले थे? 7th or 8th standard? नहीं, 9, 10 से भी हम स्कूल में थे. But Yes, I think I taught you till grade 8, and then I think the yeah, sections changed. Yup. And फिर Yes. COVID, and then you left the school, I Hmm, believe. hmm, hmm. When did you leave In the school? 2021 January. Oh, just before the Hmm. pandemic. It was before the second wave. Hmm. Hmm, hmm, Nice. hmm. So, how's Right. life going, sir? How's life been lately for you? Everything is fine. So, first of all, I would like to say that you are doing a good job. Thanks. And I don't know whether it's required or not, but this is what I feel. And if you don't run too much after the numbers and you persevere and you just go on one step at a time, perhaps the day is not far when people would be willing to pay to come onto your podcast or interview or whatever you call it. So I wish you all the best. And whenever I see the little parts of your podcasts, whatever you have done so far, Yeah. it looks good. And for me, it is like I've never done this kind of a thing. And I'm a bit excited as well, and I'm a bit curious as well that how does it go. So all the best. You are doing a good job. Thank you So so much, sir. now, हाँ जी, बोलो. नहीं, come on, tell me. नहीं, मैं बस ये बता रहा था कि it had been a while that I had given it a thought. Mm-hmm. And मेरे को तो टीचर्स हमेशा कहते थे कि आप बहुत बोलते हो बेटा, हमेशा की ये कब. मैंने कहा why not just take it as a side hustle types. Why And not? Right. 11, And 12 maybe was, with time, we'll see. yeah, I just want to post one episode every Wednesday, not seeing how many views I'm getting, no Good. likes, nothing. Good. Just one episode every Wednesday goes out. I feel happy. My peers, I get a bit validation in class, college. That's all I want. That's it. That's good. That's good. Yeah. So That works. Yeah. So I just wanted to ask, how has life been lately for you? How has everything changed? Yes, topsy-turvy sometimes interesting, sometimes it puts a lot of questions in front of you, but in a nutshell, quite good or interesting as well. For example, 2021 January, I resigned from the school, and my first government posting was in Dehradun. So I was working for the Ministry of External Affairs. I was in Dehradun for 2.5 years or so, from January 2021 to August 2023. That is the last year. And then I reappeared for this again competitive exam. So because I wanted to come back to Delhi, Okay. and transfer was not easy from Dehradun to Delhi, so I had to reappear. And I came here in August 2023, and I'm living with my family since last August, and everything is good so far. My office is in Arkipuram, and so far it's fine. This is that.
Beautiful. So, what exam did Mm. you appear for? Uh, See, this exam is a special exam which is taken up for the translators, and it is conducted by SSC. okay. So you need a post-graduation degree plus a special post-graduation diploma in translation. Hmm. And that was the plan. I appeared for it and I went through. Very nice. So, अभी Hmm. आप ऐसे दिल्ली में हो. मैं Yes. let's just move 5 years back. Okay. How Yes, was okay. school for you? How was 2019. our batch, or how was even any batch you taught? How was DPSG as a Uh, school to work? Have the young India being surrounded by the young Indians. See, first of all, it was my first job, so it was, of course, special. And I joined DPSG in 2017. So I was trained by very young, very brilliant minds and professionals, the academicians. They were very good. The training was good. And see, I enjoyed in that school or enjoyed teaching because the profession that I chose, teaching, it was by choice. I became a teacher by choice and not by circumstances. And that is the reason you will find teachers, those who are passionate, or they go into teaching by their choice and not by circumstances. कुछ लोग ऐसा होता है ना, they just look at it as one teaching, one profession कि यार चलो कुछ और नहीं हो रहा तो teaching करते हैं. They are not usually very good at their job, that I can say very honestly, and they are not liked by the students as well. That is for True. sure. So it was my first job. It was special. I wanted to teach. It was a good place to start. And you are from the batch of, for example, I remember a few names. Diva, Anya, Yeah. and Krishna Murari. Was he in your batch Yeah, as well? maybe. I am Right. not in touch with the guy, but I've heard his name. Okay. You have heard a name from your own batch. Okay, that's the news. Yes, so I remember a few names, and of course, I was the class teacher of this grade 8E, then Yeah. 8E, 9E, and 10E. So it was quite an exciting time, I would say. Of course, because I loved my children, I loved my students, so they loved me back. And I loved the attention sometimes, but it was very good. I learned a lot, and I kept telling it to you as well, or the other students, other classes as well. Ki yes, of course, you are learning from me, but trust me, I'm learning equally from you. At that time, of course, at your age, the students are like, "Oh, sir, to kuch bhi bol rahe hai," but that's not the case. It was true. So Yeah. that was quite lovely, and I used to stay very busy. Sometimes it was too hectic, but this is how the private teaching stuff goes. And I remember when I resigned from DPSG, suddenly I was free because it was my first government posting. I was learning a lot of things. It was quite relaxed. And I was missing the school badly, although I was happy to join the government service as well. And I remember discussing it with my wife, with my parents, that should I go back to the school? And they were like, no, you're getting too emotional. Because I'm an emotional person, I get emotional easily. So वो थोड़ा difficult phase भी था. Because I was thinking कि I think I was better suited as a teacher. I was thinking कि मुझे लग रहा था कि I think I could have contributed more by teaching, but life had other plans. So that is that about the school. But that school will always have a very, very special place in my heart, and that is the reason we are talking here. That is true. We stayed in Mm. touch. But school तो हमारा था काफी इमोशनल टाइप. जैसे you तो Mhm, taught for 3 years, right? I mhm, was there mhm, in the school from 15 years straight, from mhm. Of course. pre-nursery to 12th. ऐसे Mm, एंड हमारा ऐसे प्राइम टाइम जो होता है 10th 11th गॉट इन कोविड. 12th में mm, स्कूल आना हुआ नहीं बिकॉज आई हैड PCM. एंड आई mm, वाज लाइक ओके. एंड जब हमारा फेयरवेल हुआ स्कूल में अनऑफिशियल, mhm. तो ऑब्वियसली DPSG है, दो एक फेयरवेल तो होगा नहीं, दो तीन हुए. बट द मोमेंट we were there in Stadia celebrating, saying bye to each of our teachers and friends, and I was like Mhm, shit, अब स्कूल लाइफ mm. खत्म. Yes, I remember seeing those photos. Yes, a lot of you were putting the status updates. Yeah. Yes, and at that time as well, one of my students, she cropped me in a photo,
just to, make me feel a bit nostalgic. Had I been there, then so it was quite nice. It was Shivangi who did that. And while looking all of you at those photos, I was getting a bit emotional again. Of course, it sounds too foolish sometimes, but वो मेरे लिए ऐसा था कि शायद मैं वहां होता, काश होता तो अच्छा होता. But Yeah. this is how it is. But yeah, ऐसा होता है ना कि you Hmm. life has something better for you way ahead. Hmm. Yes, better we don't know, but yes, it's good. मतलब कुछ तो होगा जैसे Right, right. जस्ट लाइक यू सेड कि आपको ऐसे टीचिंग से गवर्नमेंट जाके थोड़ा सा लग रहा Hmm. था कि यू शुड हैव गॉन बैक टू टीचिंग. मेरे को भी Hmm. ऐसे कॉलेजेस आई हैड ऐसे प्रिटी ऑप्शंस. आई वाज गुड इन Hmm. अकेड्स बट Hmm. 11 12th के बाद it's something that I was like, okay, let's take acads a bit lightly because there is Hmm. life way ahead rather than just acads. So I was like, Hmm. yeah, there's this college called Bits Pilani. I was like, I Hmm. want to go there. I studied way Hmm. hard but could not clear first attempt. Hmm. Second attempt Hmm. mein main itna exhaust ho gaya tha. I was like, no, I have just one college. I'm going back to I Chennai. get it. Yeah, I get I'll it. go Hmm. Chennai, but still till the day अब since I had given the exam last year, अब वापस exam आ रहा है and I'm thinking, shall I give it again? मतलब क्या पता हो जाए टाइप्स. बट आई एम Natural. लाइक नहीं, आई एम ग्रेट वेयर आई शुड डू आई एम बिकॉज मेरा बेसिक मोटिव था कि आई वांटेड टू स्टडी कंप्यूटर साइंस. Hmm. एंड आई वाज लाइक जहाँ जहाँ मेरे को मिल रही है आई वाज गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई वाज लाइक नहीं मेरे को करना कंप्यूटर साइंस है बिकॉज मेरे को वो डबल डबल नहीं करना कि आप कॉलेज में कुछ पढ़ Hmm. रहे हो एंड फिर घर जाके यू आर स्टडिंग समथिंग एल्स बिकॉज Hmm. इवेंचुअली आईटी में ही जाना था मेरे को. एंड आई Hmm. एम लाइक ठीक है लेट्स जस्ट टेक दिस कॉलेज. कॉलेज थोड़ा सा डल है, अकेड्स के मामले में बहुत अपॉर्चुनिटीज है. इट्स जस्ट Hmm. जो कॉलेज वाइब हमारे बॉलीवुड सेट करके दे देता है करण जौहर फिल्म्स टाइप्स. Hmm. आई एम लाइक नहीं इतना तो कुछ नहीं हो रहा, 1% भी नहीं हो रहा, बट दैट्स व्हाट हैपेंड. Hmm. I know. या सो जैसे आपने बोला कि यू बिकेम टीचर बाय चॉइस. what inspired you to become a cool teacher? You were not just an ordinary teacher for sure, because Thank you so much. you were loved Cool by teacher. every you were loved by every student. ऐसे कोई Uh, क्योंकि वी एज स्टूडेंट्स ऐसे hmm. बोलना नहीं चाहिए बट हाँ बिचिंग टीचर्स की होती है बैक में. Of मतलब course, ऑफ I know कोर्स that. Yes, I've been a इवन student as well, so I know. या हाँ. Right. तो बट Hmm. ऐसे पर्सनली आई हैवंट सीन एनीथिंग रिलेटेड टू दैट. मैंने उल्टे आपकी तारीफें बहुत सुनी थी दूसरे सेक्शन से until and unless you were Hmm. teaching us. I was like, Hmm. this person is great. Cool. See, the thing is, I perhaps because I was teaching English literature and not maths, maybe that could be one of the reasons. Second is because I'm like that. मतलब I would like to be modest. I would like to stay modest here, but the thing is कि मैं हूँ ऐसा ना. I just love cracking up jokes sometimes, and मुझे ऐसा फील होता था कि मुझसे पहले अगर कुछ किसी का हिंदी का पीरियड है और कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर वहां से गया है तो I couldn't have survived with that kind of atmosphere. I had to make things light, and sometimes I understood कि भाई they are studying, okay, session after session, and perhaps while they are going back at home again they have their sessions and tuitions and all. तो मुझे पता होता था कि I have to do something else, something different. So उसका लॉजिक यही होता था कूल रहने के पीछे, टू मेक ऑल ऑफ यू लाफ समटाइम्स, जिससे कि यू स्टे विद मी. So that Yeah. was the psychology that worked, and I remember offering you PT periods as well या sometimes, वो because बहुत फन होता था. sometimes ऐसा था कि थ्योरी है नहीं चलो बाहर खेलने चलेंगे. यस वो लेट्स गो. हाँ राइट, वो इसलिए भी था because I've been a student of literature and I think I understand the young minds better. Perhaps और बहुत बेटर लोग आएंगे एजुकेशन सिस्टम में, बट मेरा यही था कि ऐसा नहीं था कि कूल होने के लिए आई हैड टू बिकम कूल. इट वाज मी. And seriously, honestly, I loved getting those sessions without any disturbances. We are studying a story. For example, I remember कुछ sessions इतने memorable थे कि I still remember. और मुझे अच्छे से याद है कि I was discussing this story by प्रेमचंद, कुछ था इंग्लिश में. ईदगाह और I think so. ईदगाह वाज इन And आवर then, सिलेबस. yes, so मुझे याद है कि I got so beautiful interpretations from different sections. So every evening I was discussing it with some of my friends. So
I was telling them कि यार इतना surprising है. What I expect from my students is actually they surpass it sometimes. तो literature can actually be very what do I say, आपको बिल्कुल सारी सेंसेस को कैप्टिवेट कर सकता है. एंड कभी कभी क्या, बहुत बार ऐसा वो माहौल बनता था क्लास में, जो मुझे अटेंशन चाहिए थी वो मिलती थी, एंड आई लव दैट. एंड दैट इज द एक्चुअली फन ऑफ लिटरेचर. दैट इज द ट्रू व्हाट वुड आई से मोटिव ऑफ लिटरेचर. Yeah. तो वो मजा आता था मुझे. और फिर कूल होने का तो ये था कि ठीक है, अच्छा है, बाकी सब तो इतने स्ट्रिक्ट है ही, लोग यहाँ पे सिलेबस के पीछे सब भागते रहते हैं. सो पीटी पीरियड में तभी ऑफर करता था कि जब मुझे लगता था कि अब सिलेबस मुझे खिंचवाना है, तो आई हैव टू गिव देम समथिंग. एंड इट्स ऑलवेज वर्कड. एंड आई रिमेम्बर वो प्रॉमिस मुझे पूरा करना होता था. समटाइम्स इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई हैड टू आंसर द कोऑर्डिनेटर्स एंड एचएम एज वेल. But I managed somehow, and it was lovely. And all of you were cool as well. So the energy was mutual. It was nice, right? Yeah, talking about ऐसे your way of teaching, I remember this Hmm. one thing. There was this anonymous jhola that you brought in our class once. ठीक है, वो concept that was. Am I saying? मैंने आन्या को भी कॉल करके पूछा कि उस झोले का नाम क्या था. मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है. हाँ, मैं दिला देता हूँ याद. आई थिंक होगा कहीं पे यहाँ रखा हुआ. वो फेमिनिस्ट झोला था. फेमिनिस्ट झोला, वेरी नाइस. तो उसका Hmm. ये इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैं सबको बता देता हूँ कि देयर वाज दिस झोला केप्ट इन आवर क्लास, Hmm. and we have to just put out our thoughts, things that we are feeling are not going right with ourselves, things जो हम किसी और से शेयर नहीं कर पाते, and Hmm. anonymously एक शीट पे लिखो, फोल्ड करके किसी को बिना बताए उस झोले में डाल दो, एंड वो Right. पब्लिकली जो एड्रेस हो जाता था, सबको पता लग Hmm. जाता था. एंड आई वाज लाइक डैम, ये इतना कूल कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. मेरे को वो जाना. Thank you so much of reminding me of that. मैं भूल ही गया था उसको. तो वो actually I was just fresh passed out from the university, and it was a very good university. My course was also very good, Delhi University. MA English you are doing regular, so I was of course full of ideas. वो बस ये था कि ये कनॉट प्लेस में सीपी में एक ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर है, बारखंबा रोड के पास बिल्कुल. मैं वहां बहुत जाता था पहले, अभी तो बहुत टाइम हो गया गए हुए. तो वहां पे मैंने ऐसे घूमते हुए ये झोला वहां पे देखा. इट वाज ऑन द डिस्प्ले, एंड एट दैट टाइम आई वाज टीचिंग. सो आई थॉट कि यार ये इंटरेस्टिंग हो सकता है, ये इससे मैं कुछ कर सकता हूँ. एंड आई रिमेम्बर आई वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम. आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड कृष्णा मैम अबाउट दिस आइडिया, and to my surprise Krishna ma'am accepted it wholeheartedly. She said it's very interesting, it's very nice, and you must do it. उस same day after 15 minutes there was a teachers meeting in the ground floor, I think computer lab or something. And to my surprise again Krishna ma'am told this idea, shared my idea with all the teachers. थोड़ा सा मुझे awkward लगा कि यार पता नहीं बाकी सब लोग क्या सोचेंगे. Sometimes teachers with time they become a bit conservative, I would say. Not to blame them, but it's like that. They would be thinking कि ये नया आया है तो he's trying to impress maybe the management or the students or something like that. But it really worked, and it was very interesting. क्योंकि मुझे कुछ एक point चाहिए होता था क्लास में जिससे कि you stay glued, है ना, किसी Yeah. को बंक करने का या किसी को कुछ बहाने करने का मौका ना मिले. So that's why I was not strict as well. So yes, thanks that you reminded me of that. Yes, it was nice. It was great. Yes, it was just an idea जो मुझे वहाँ ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर से मिला. I just thought about it. ओके, आपने बताया Hmm. टीचर्स मीटिंग ऐसे फुल डिस्कशन होता है. मेरे को ये Mhm. जानना था बैक कॉन्टेक्स्ट Mhm. कि व्हाट हैपेंस इन अ टीचर्स स्टाफ रूम. क्योंकि ऐसे मैं रैंडमली आता था, मेरे को टीचर्स ऐसे क्लास मॉनिटर की तरफ बुक्स लेके आता हूँ, मैं क्लास में आता था, सारे टीचर्स हंस रहे होते थे, मैं आता था, मेरे को देख के सारे चुप हो जाते थे. मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं. What वो was just वो चुप. happening? See, मैं बहुत clearly बता सकता हूँ, honestly बता सकता हूँ, because I've spent 3.5 years there. वो हो सकता है कुछ अपनी पर्सनल बातें कर रहे हो, एंड आई एम श्योर दे डोंट वांट टू शेयर इट विद यू. कुछ भी हो सकता है, जैसे तुम फ्रेंड्स पे डिस्कशन कर सकते हो अबाउट द क्लोथ्स, अबाउट द बिहेवियर ऑफ समवन एल्स, अबाउट द फैमिली, कुछ जोक, कुछ प्रॉब्लम, एनीथिंग. इट कैन बी एनीथिंग. और ऐसा होता है कि टीचर्स वैसे बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं स्टूडेंट्स को डिस्कस करने के लिए, बिकॉज आई नो कि स्टूडेंट्स को ये इम्प्रेशन है कि हमारे बारे में तो स्टाफ रूम में बात होती है.
या होती होगी. दैट्स नॉट ऑलवेज द केस. हाँ, कभी कभार कुछ ज्यादा ही गॉन केस हो तो वो हो सकता है डिस्कस, क्योंकि टीचर्स आर ऑलवेज बिजी, especially in a private setup जहाँ पे you are running always running out of the time because you have so many presentations, you have so many lesson plans to prepare, you have to deliver your classes, you have to prepare the class list, you have to do the bus duty. I mean, the world will end, but not the work of a teacher, especially in a big private school, दिल्ली एनसीआर में. तो ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस करेंगे. So, what are we eating and what did you do last night? Where did you go? Etc. 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 स्टूडेंट का रेशियो डिस्कशन का बहुत ही कम, रेयर केसेस होता है. अदरवाइज पर्सनल स्टफ. मेक सेंस. बट अभी आपने बताया कि ऐसे दुनिया खत्म हो सकती है, टीचर की जॉब नहीं एक दिन. काम काम काम, टीचर का काम खत्म नहीं होगा. ऐसे आई वाज विद राइट. दुष्यंत सर लास्ट मंथ व्हेन आई वाज बैक होम, एंड ही वाज आल्सो लाइक कि they had to stay back for some work ऐसे on daily basis. And if you don't mind me asking, and I was very curious about it, how much does a teacher basically earn on an average in any public Yes. sector? Okay, see, public sector मतलब हुआ केंद्रीय विद्यालय, Government. गवर्नमेंट हाँ जी. स्कूल. Okay, see, there are different scales. Okay, for example, I'll make it easier for you. It's first is PRT, primary teacher, grades 1 to 5. After that, classes 6 to 10, it's PGT, trained graduate teacher. And then for classes 11th and 12th, it's PGT, postgraduate teacher. For all these three different categories, your eligibility and qualifications are different. For example, if you have done your masters or MTech or whatever, and you have done your B.Ed, only then you are eligible for this PGT. That means you are eligible to teach classes 11 and 12. For TGT, trained graduate teacher, जो class 10 तक पढ़ाते हैं आपको, they have to be graduate. Post graduate है तो ठीक है, it doesn't matter. Graduate plus B.Ed, and in some cases there's one special exam called CTET. For the PRT, graduation and B.Ed is required. ठीक है, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी. नाउ ऐसी इसी के हिसाब से उनकी सैलरी होती है. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट केंद्रीय विद्यालय जो कि पूरे इंडिया में, उसके लिए एग्जाम होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम, और ठीक ठाक स्केल का होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एम इंग्लिश किया है तो आई एम एलिजिबल फॉर टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर टू क्लासेस 11th एंड 12th. कंडीशन उसकी है मेरे पास B.Ed होना चाहिए, जो कि है मेरे पास. तो अगर मैं एग्जाम देता हूँ, वो एम इंग्लिश से रिलेटेड एग्जाम आएगा, कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे, कंपटीशन होगा. इफ आई गेट सिलेक्टेड, सो माय स्टार्टिंग सैलरी वुड बी अराउंड 85-90,000 per month. per month. Yes, it's for the public sector. और कुछ और perks भी होते हैं, and you get timely increments. And the first and the foremost difference between any private sector and a public sector job is your security. जॉब इज सिक्योर. अगर पैंडेमिक आएगा, या कल को इन्फ्लेशन होगा, या रिसेशन आएगा, कोई भी स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए किसी भी दुनिया का, रुपी वर्सेस डॉलर का रेशियो जबरदस्त हो जाए, बट योर जॉब विल ऑलवेज बी सिक्योर. सो दैट इज द डिफरेंस. सो 80-90,000 अराउंड फॉर द पीजीटी क्लासेस 11th एंड 12th. फिर ऐसे 10-15 हजार का डिफरेंस होता चला जाता है टीजीटी एंड पीआरटी. But with time it increases, and the salary is not bad, I would say. And what about the private sector? How does it work? Private sector, again, it depends on your school. For example, if you are Our teaching school, in a school, for example. in our school, sometimes the schools, they don't follow the exact structure prescribed by the governments, because private school, at the end of the day, it's a profit-making entity. And you know how your MNCs work. MNC ka hi culture hai, but the package is not like the MNCs and corporates. So in the beginning, it can be around 50-55. And for example, the teachers, those who are doing well, or those who have been staying in that school for many years, the senior teachers, I'm sure they are getting around 1.2, 1.3 sometimes per month. 1.3 lakh, 1.2 lakhs as well. The senior teachers, those who have been working there for many years. एंड फिर अगर कोई HM है या कोई प्रिंसिपल है, तो ऑफ कोर्स दे ड्रॉ बेटर सैलरी. ऐसे ही ये, फॉर एग्जांपल, ये DPS, एमिटी, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्कूल. अगेन, देयर आर बेटर स्कूल्स. फॉर एग्जांपल, जेनेसिस स्कूल, शिवनाडर स्कूल, पाथवे स्कूल, एंड मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड, जो थोड़ा और एक्सपेंसिव है. आई एम टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर. सो नेचुरली उनके टीचर्स की सैलरी थोड़ी ज्यादा हो सकती है.
but there's nothing certain. It can be good sometimes, and what to say? That is the answer. बट फिर वर्कलोड भी उसी के हिसाब से होता है ना, जैसे आपने बताया. Yes. See, workload का problem बस ये है कि, for example, I love teaching, and ये question मुझसे कभी कभी पूछा भी जाता है that if you were a teacher by choice and you were so passionate about teaching, why did you leave it? Which is quite a genuine question. Abhi I was there in an interview for one more exam, which I would share with you later on. तो उसमें भी मुझसे यही पूछा था कि जब आप वहाँ पे टीचर थे तो आपने यहाँ पे क्यों ज्वाइन किया, व्हाई डिड यू ज्वाइन? सो द सिंपल आंसर इज, मुझे आदित्य की क्लास को या अपनी 8E को 9E को पढ़ाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. दैट वाज माय पैशन. दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज रनिंग आफ्टर. वो एक ऐसी चीज थी. बट उसके अलावा आई हैड टू डू a lot of work which sometimes did not make sense, है ना? Yeah. Some administrative and clerical tasks. Again, nothing against the school, but sometimes CBSE demands that, or sometimes there are other requirements that are to be met. So that actually kills a teacher, which is very dangerous. तो वो जो है एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी. So sometimes it can be managed, but sometimes it becomes terrible. Teachers can lose their sleep. It is horrendous sometimes. And I don't want to sermonize or patronize है. मैं ये नहीं बोलना चाहता कि the students must understand, the parents must understand. It's not like that. Students are young, they are growing up, they are not mature. We do not expect maturity from them. Parents are paying, and they are paying, so they want the service. Yeah. In the middle, the teachers are caught. The management is expecting from the teachers, the students are expecting from the teachers, and the parents, of course, are expecting from the management and the teachers as well. And there's a lot of competition. You know the market of India. So one kick, you are out, and two others can join, True. at your place. So that is why workload is sometimes justified, which is not right, but this is what it is. I'm sure because you are in this sector, you have heard Narayan Murthy speaking about the number of hours we should be working, but Yeah. it can be strange. एंड आई ऑल्सो फील कि ये थोड़ा इंडिया साइड ज्यादा होता है, बिकॉज अब्रॉड पीपल आर पेड फॉर व्हाट दे वर्क, एंड वो उससे ज्यादा अपने आप वो दे जस्ट वो हाथ ऊपर खड़े कर देंगे कि बस में हम या तो पैसे बढ़ाओ वरना हम काम नहीं करेंगे. इफ अ टीचर इज टीचिंग, ही इज जस्ट टीचिंग, ही वोंट डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है. फॉर एग्जाम्पल, वी वर इन फ्रांस फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम. वहां पे यही होता है. टीचर्स, दे टीच, दैट इज इट. They won't go out for picnics. They won't go out for tours and all for the school students. उनका काम पढ़ाना है. And in Australia right now, there's a very interesting discussion going on, which is called right to disconnect. Once you leave your office, your boss cannot call you or text you or mail you regarding any sort of work. If he or she does, first of all, उसके against complain हो सकती है. Otherwise, he has to pay because your work time is over. That is it. You have a right to disconnect. But we take these things for granted because the market is such. हम यहाँ jobs की बात ही कर रहे हैं अभी, वो वहाँ पे right to disconnect की बात कर रहे हैं after the jobs. That is the problem. We have a long way to go. yeah, because ये बट काफी अच्छा है. आई ऑल्सो डिड एन इंटर्नशिप बिफोर कमिंग टू कॉलेज, एंड मेरे को आई वाज पेड गुड इनफ एज एन इंटर्न. आई वाज पेड 5,000, बट आई वाज लाइक मेरे को भी ऐसे आई यूज्ड टू कम बैक लेट and then I have to go back early. I had to go back as beach mein there was this event organization I was working for in PR agency, and I had to go from Ghaziabad to Punjabi Bagh, so I had to wake up at 5:30, catch a metro at 6:30, and then go reach there by 9. ऐसे तो Definitely. employees are kind of exploited, but फिर वही है, market competition इतना ज़्यादा है इंडिया में, कोई ना कोई आ जाएगा. बिल्कुल. हमें भी इसलिए ट्रेन किया जा रहा है हमारे कॉलेजेस में कि गेटिंग अ जॉब इज द फर्स्ट जॉब इज द टफेस्ट थिंग, बिकॉज इतने ऑप्शंस हैं, इतने लोग हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन, आईटी सेक्टर में भी जैसे गिविंग जेई इज द बेसिक मीन्स, राइट? उसका भी हर एवरी ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग फॉर द एग्जाम्स इज इंक्रीजिंग बाय 1 लाख पर ईयर ऑलमोस्ट. सो इतना कंपटीशन हो गया, एंड इट्स लाइक सप्लाई इतना ज्यादा है बट डिमांड लिमिटेड है. Definitely. या Of course. तो ये है, प्रॉब्लम है.
इंडिया में ये प्रॉब्लम है, and आपको लगता है, डू यू थिंक इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर इट? Solution is that you win the competition because and that's true. I would tell you that's true. क्योंकि हाँ solutions हैं but they are long term solutions. There are no easy solutions because वो genuine problem है. Our population is yes 1.345 billion whatever because census has not taken place officially, but yes we have defeated China. Yeah. So ये problem तो रहेगी. Long term solutions हो सकते हैं governments के पास, and that's why the government is focusing a lot on the startups, entrepreneurship, etc. etc. वो इसीलिए है कि वो job demands का pressure create ना हो. But somehow, end of the story, you have to win the competition. That is, ऐसे be in the top 1% to beat the rest 90. Yes, I'm being brutally honest here, so it's like that. नहीं, जो सच है वो तो है ही ना. हमें भी यही Mm-hmm. हमें भी कॉलेज में ही कहते हैं, यू हैव टू बी द बेस्ट कोडर, बिकॉज अब तो एआई आ गया. Mm. फिर लोगों को लगता है कि Mm-hmm. एआई इज देयर तो कोडिंग जॉब्स चली जाएंगी. कोडिंग बिल्कुल जॉब्स नहीं कुछ भी हो जाएंगी. सकता है. Mm. हमें हमें यही बताया जाता है, कोडिंग जॉब्स नहीं जाएंगी. जो बहुत ही बेसिक लेवल पे कर रहे थे ना, उनकी जॉब्स खतरे में. Mm. दोज हु आर एट द टॉप 1%, और फॉर एग्जांपल अब पॉपुलेशन इतनी है, दोज हु आर एट द टॉप 10%, उनकी जॉब्स को कोई Mm. थ्रेट नहीं है. बाकी जो अभी भी बेसिक्स पे ही स्टिक कर रहे हैं, दोज हु आर जस्ट लाइक कि हाँ आई वोंट लर्न और ग्रो, उनकी जॉब्स आर नाउ इन थ्रेट. Mm-hmm. ये actually it will be seen क्योंकि जब industrial revolution हुआ था, so people had the same thing in mind कि अब तो machines आ गई है, why do we need people? But that was not the case first. Second, when the computers came, again we thought the same. Yeah. And when this AI has come, or it is yet to come in full force, again we are talking about the same thing. But I don't think वो बहुत जबरदस्त तरीके से अफेक्ट करेगा. कुछ तो ऊपर नीचे होता ही है. That's true. वो नहीं आता AI तब भी nature of job change होता ही है. For example, I remember I passed out from my school in 2011. I had never thought about this job which I'm doing right now. तब तो कुछ भी हम सुन के बोल देते थे. ये बोल रहा है क्रिकेटर बनना है तो हम भी बोलते हैं हाँ आई वांट टू बिकम अ Astronaut. क्रिकेटर. ये बोल रहा है कि एनडीए क्लियर करना है. हाँ हाँ ठीक है, एनडीए मैथ्स में डब्बा गोल है बट एनडीए क्लियर करना है. तो इट्स लाइक दैट. एंड फॉर एग्जांपल दीज फैंसी जॉब्स व्हाटएवर वी हैव राइट नाउ था ही नहीं कॉन्सेप्ट, बट पीपल Yeah. आर डूइंग दैट. तो ठीक है, टाइम विल टेल. Content creation has become a job now for people. हाँ, of course, US, because people yeah, people are so people, what would I say? People are so consumers. engrossed in social media, I would say, कि creativity is dying. So yes, you need people, those who can create, and those who can create, they will win you the, what do I say, customers or consumers. Consumers. Hmm. Yeah, because ऐसे US में there was a survey, and earlier it was like people पहले vague answers देते थे कि astronaut, teacher, जो ऐसे बहुत ही basic level पे हमारे time पे थे. Now children are like 90% of the children are like, I want to be an influencer. Instagram, all the girls are like Instagram influencers or YouTubers. And honestly, this industry has grown massively and has a lot of potential in money. Mm-hmm. People That's are right. getting, I don't know, just for a basic story uploading, they are getting 1 lakh rupees, which makes no sense, to be very honest. But जो long form है, those are justified. Instagram पे they don't earn enough, but from YouTube, people have been earning and became multi-millionaires. That's true. Yup. Okay. Staff room done. Okay, हाँ, मेरे को ये पूछना था. ऐसे I have a set of questionnaire जो मैं Please go ahead and I'll be honest. Yes. Yeah. Okay. So मेरे को पूछना था. You taught 3 years in our school, and उससे बस चले जाएंगे. Last question about schooling कि what was the best moment of your teaching career and what was the worst? पहले worst बता दो, बाद में best बता देना, जैसा आपको अच्छा लगे. Worst. I can't think of many because overall it was very good. ऐसा वैसे मैंने सोचा भी नहीं इस तरीके से कभी, but worst. Worst I think worst तो नहीं, but एक वो चीज थी कि sometimes I wanted to do more creative things, but I was not given the liberty to do those things.
पता नहीं वो वर्स था कि ठीक था, बिकॉज मे बी आई वॉज यंग एंड देयर वर मोर एक्सपीरियंस टीचर्स एंड दे अंडरस्टूड कि ये कर सकते हैं कि नहीं. बट आई थिंक कि शायद हो सकता था कुछ और भी बेटर. बट उससे पता नहीं फायदा होता कि नहीं. मुझे लगता है शायद हो जाता. तो वो कह सकता हूँ मैं, क्योंकि बाकी एवरीथिंग हैज बीन सो गुड. और बेस्ट बेस्ट जैसे मैंने बोला कि जब मुझे अनहिंडर्ड, विदाउट एनी डिस्टरबेंस एक पूरा सेशन मिलता था दिन में, किसी भी क्लास के साथ, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय डे. एंड उस दिन मैं पूरे दिन आई यूज्ड टू स्टे इन द हाई एनर्जीज बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस दैट आई यूज्ड टू रिसीव. अब बेस्ट तो ऐसे मेमोरीज फिर ये है कि I got attached to the students and students got attached with me. And yes, I still receive messages from a lot of students for the Teachers' Day and for my birthday. And I feel कि 3-4 साल छोड़े हो गए हैं school. It's my 4th year. And I'm sure कि मैं कुछ students के साथ lifelong touch में रहूंगा. I believe that firmly. So that is the best thing that happened to me. I would say that. Fairness. मतलब yeah, it's glad that we are also connected because I'm also not connected with I'm just connected with one or two teachers even after I've It's natural, graduated school naturally. Quite recently. natural. And काफी teachers ऐसे they just consider as a job and they're not passionate about it, तो वो obviously वो connect छूट जाता है. हाँ, मुझे ये भी याद है कि कुछ बच्चों से सुना था मैंने, बोलते थे कि जब सेशन चेंज होता था, मतलब सेशन नया सेशन शुरू होता था, सो देयर वर सम स्टूडेंट्स दोज हु यूज्ड टू बेट कि इस बार सर इस क्लास के क्लास टीचर बनने वाले हैं. एंड देयर वर सम स्टूडेंट्स जो आते थे कॉरिडोर में मेरे पास भागते हुए कि यू नो इट्स अ सब्स्टिट्यूशन पीरियड, यू कम टू आवर क्लास. हाँ. तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं व्हिच रियली हैपेंड एंड I was very happy at that time as well. And when I'm recalling those things, so it gives me a very different kind of a pleasure. तो ये सब हुआ because perhaps I was into teaching too much. So very good thing. तो फिर since you've left teaching Mm-hmm. so आपका ऐसे transition कैसा रहा, like your transition from a teacher to being a translator? It was not easy, I would say, because while I was teaching, it was too hectic. Sometimes इतना हेक्टिक कि मैं भूल ही जाता था कि आज पूरे दिन में क्या खाया मैंने, कहाँ था मैं, कब क्या किया. और इट वाज क्वाइट रिलैक्स, इट इज क्वाइट रिलैक्स, नॉट क्वाइट रिलैक्स बट ऐसा है कि इतना हेक्टिक नहीं है. सो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा एक आइडेंटिटी क्राइसिस टाइप भी हुआ कि let's go back because it was too happening, you know, because staying with young minds all the time and constantly pushing yourself to do better, वो कई बार बहुत अच्छा भी होता है. Of course it exhausts you at the end of the day, but it is rewarding as well. तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ स्टार्टिंग ट्रांजिशन तो इजी नहीं था, बट somehow I made peace with it. And again it's about languages. Common thread यहाँ पे ये है, I love languages and I've been a student of languages and I keep learning different things whenever that's possible. तो वो एक टच अच्छी बात थी कि ओके कि इसके थ्रू मैं आगे चल सकता हूँ because it's about languages at the end of the day. So what That got kept me going. yeah, तो मतलब what got you into languages? Because जैसे मेरे को personally there was this movie called The Social Network जो Netflix पे है, and then there's this series called How to Sell Drugs Online, fast in brackets, that's also on Netflix. That fascinated me about computer science and I got deeper into it. आपको क्या fascinate करा that you got deeper into languages? मुझे ये फैसिनेट किया कि मुझे पता चल गया कि साइंस मुझसे नहीं होगा. आई थिंक ये आई थिंक ये सच है. व्हेन आई लुक बैक एंड दिस इज ट्रू. एंड मुझे ये भी लगता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन कंपैरिजन कि आपको ये पहले पता होना चाहिए कि व्हाट यू कैन नॉट डू, या आप क्या नहीं कर पाओगे या नहीं कर सकते हो, रादर देन ये कि आप कर क्या सकते हो. बिकॉज एक वो एलिमिनेशन मेथड होता है, आप ये चीज हटा सकते हो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, हाँ फिर ये बचा, ठीक है इसको हम करेंगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा चॉइसेस बचती नहीं. I was in grade 10 and then I decided I'll take PCM because I wanted to crack NDA. Class 10 तक everything was fine, but 11th 12th में वो calculus आया, integration आया और organic chemistry and so many other things. I'm sure you know that. Yeah. तो that actually hit me hard. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलत हुआ, मुझे नहीं लेना चाहिए था. वो पीयर प्रेशर था या लैक ऑफ काउंसलिंग थी या व्हाटएवर दैट वाज. एंड सडनली आई चोज इंग्लिश ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बिकॉज आई न्यू कि इफ आई गो फॉर बीटेक,
even with some money or some external help, even if I secure admission somewhere, I won't be able to go through. I knew it, and I was very honest at that time with my parents as well. You won't believe I had 21 students with me, my batchmates, the boys. I was the 21st. So out of 21 boys in 2011, 20 opted for engineering. I was the only one who did not go for engineering. I'm talking about 2011. Many of them are doing well, जिनके साथ भी मैं टच में हूँ. तो but no regrets. And when I look back, that was the turning point. That I knew कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ. I cannot go for BTech etc. तो मुझे ये करना चाहिए. And suddenly मुझे लगा कि हाँ यार ये तो इंटरेस्टिंग है, ये तो अच्छा है, तो कर सकते हैं, मजेदार है. And I did well, and I never looked back. So that's why. तो मुझे अच्छा लगा कि ये ठीक है यार, ये करना चाहिए मुझे. नहीं, सही है. मतलब ये दैट फिलोसफी आल्सो वर्क्स कि जो चीज़ नहीं कर सकते Hmm. वो पहले एलिमिनेट हो जाएगी. तो फिर ऑप्शंस ही दो Right, बचते हैं. लाइक right. एमसीक्यू है, डी नहीं है, ए नहीं है, बी और सी में तुक्का मार के देखते हैं, जो लग गया वो हाँ सही है. हाँ, तो मैं सप्लीमेंट्रीज के साथ, कंपार्टमेंट्स के साथ बीटेक नहीं करना चाहता था, एंड आई वाज श्योर कि ऐसा हो सकता है. सो वो एक ऐसा था कि हिट एंड ट्रायल कह सकते हैं, which does not sound very good, but it worked in my favor because I grew more interested with novels and theories and so many things in books. So it was quite interesting. And this is how I discovered my love for languages. So what is your favorite book or novel to read when ऐसे एक एक तो नहीं होगी obviously because you have grown with books, right? ऐसे Mhm. what who's the set of author that you read just to take an escape from reality? एस्केप फ्रॉम रियलिटीज में तो फिर सिंपल है, एक बुक मेरे पीछे भी रखी होगी. मेरा फेवरेट ऑथर है गैब्रियल गार्सिया मार्केज. इफ यू हैव हर्ड द नेम, ही इज अ कोलंबियन ऑथर, नोबेल प्राइज विनर, एंड ही इज नो मोर, बट ही राइट्स ब्रिलियंट. मैजिकल रियलिज्म एक होता है आर्ट फॉर्म, एक राइटिंग फॉर्म, उसमें लिखते थे वो. एंड ही ट्रांसपोर्ट्स यू टू सम अदर वर्ल्ड, and all his books are classics and bestsellers of course. बट वही, मतलब ही इज माय फेवरेट ऑथर. उनको मैंने काफी पढ़ा है, कुछ बचा होगा तो आई विल सी. बाकी तो खुशवंत सिंह इज अगेन अ वेरी गुड ऑथर, एंड आई हैव रेड क्वाइट अ few. My favorite would be Don Quixote. There's this book. It was written in 1605, in the beginning of the 17th century, by a Spanish author, Miguel de Cervantes. His name is Cervantes. So it was revolutionary because it was written in the 17th century, and they talked about various issues like the legalization of prostitution and मतलब सोच भी नहीं सकते हैं हम. So these kind of books, they challenge your mindset, they challenge your thinking. For example, Anna Karenina by Leo Tolstoy. So while I'm talking, so I'm getting reminded of various books. Yeah. For example, Karina Kapoor, her mother was pregnant and she was reading Anna Karenina by Leo Tolstoy, and that is how she named Karina Kapoor, Karina, from Yeah. Anna Correct. Karenina. So, various stories. So, Gabriel Garcia Marquez would be my favorite author, and yes, so many books. Because जैसे you're so deep into literature, मैं personally अब books नहीं पढ़ पाता. I have this Hmm. thing. I have this facade that I cannot read books anymore. I want, even for academics, I need PDFs or YT videos. I'll Hmm. study from that. मैंने बहुत Hmm. ही, there's this guy named Prakhar Gupta. He's Hmm. a graduate from Columbia University in philosophy and economics. He's a great public speaker. And he had Hmm. published his book last year by the name of Don't Shut Up. It was a self-help book, Hmm. how to deal in situations of networking, how to increase your communication skills. मैंने Hmm. full बहुत जोश में ऐसे 500 rupees निकाले. मैं कहा चलो let's order my first book from the internet. I ordered, it came very nice. I read first chapter, second chapter, and by the time I began third chapter, I'm like, ठीक है, okay. I'll prefer videos because एक जगह अब I feel I'm not diagnosed कि मेरे को ADHD टाइप से, मैं एक जगह एक किताब लेके तो नहीं बैठ सकता कभी. Hmm. हाँ, it's a personal choice, it's a personal preference. Why not? ठीक है.
Yeah. इफ इट हेल्प्स यू व्हाई नॉट. ऐसा होता है, बट ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं या बेस्ट सेलर्स हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स की बुक है, इसके बारे में मेरा एक ओपिनियन ये है कि इफ यू रीड क्लासिक्स, इफ यू रीड वेरी गुड बुक्स, है ना, किसी भी लैंग्वेज में हो, जो बहुत ही मानी हुई किताबें हैं जिन्होंने वर्ल्ड को कुछ दिया, यू नो, पीपल डिस्कस ऑन दैट, इफ यू रीड देम ना, यू वोंट नीड दिस बुक्स या फिर दीज वीडियोस. आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. जब भी कभी टाइम मिले, ऑफ कोर्स किसी की हॉबी होती है किसी की नहीं, बट इफ यू रीड अ क्लासिक यू विल फाइंड कि यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन आफ्टर अ बुक. यू विल स्टार्ट मिसिंग दैट बुक, यू विल स्टार्ट लिविंग दैट बुक. समथिंग मैजिकल हैपेंस. मैजिक वैजिक रिलीजन में तो मैं ज्यादा मानता नहीं, बट रीडिंग अ गुड बुक कैन एक्चुअली लीव यू चेंज्ड फॉर गुड. तो वो कर सकते हैं. तो फिर आई एम श्योर ये सब सेल्फ हेल्प बुक्स तुम लिख भी सकोगे फिर. आई एम श्योर दीज पीपल दोज हु आर राइटिंग, दे हैव रेड क्वाइट अ लॉट एंड दैट्स हाउ Yeah. दे राइट. Fair enough. But जैसे so I'm a layman for literature, right? What would you recommend me to read? ऐसे initially name any three books हाँ, that you would recommend. सी बहुत सिंपल चीजें कर सकते हैं. जैसे कि आप प्रेमचंद को इन इंग्लिश पढ़ सकते हो, बिकॉज ही स्पीक्स अबाउट इंडिया एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा. उस टाइम का जो सिस्टम था, सोसाइटी थी, समाज था, इंग्लिश में अवेलेबल है. दैट वुड आई थिंक सूट योर टेस्ट, है ना. हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. Makes sense. You can read Khushwant Singh, for example, again, Train to Pakistan, to get an idea about partition. और बहुत सारे ऑथर्स हो सकते हैं. अरुंधति रॉय, नो. अमिताभ घोष, नो. दे कैन बी टू डीप समटाइम्स. बट हाँ, प्रेमचंद, खुशवंत सिंह, सादत हसन मंटो, ये बहुत सारे ऑथर्स हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लग सकते हैं. मजा आएगा उनको पढ़ने में. इंडियन ऑथर्स बहुत सारे हैं जो इंग्लिश में लिखते थे, बंकिम चंद्र चटर्जी. तो उनको पढ़ के मजा आएगा. ऐसा नहीं लगेगा कि आप रियलिटी से दूर चले गए. नेवर पिक अ वेरी थिक नॉवल एंड जस्ट ट्राई टू रीड. अपना जॉनरा चूज करो जिसमें मजा आए, जिसमें लगे कि यार हाँ ये बढ़िया है, कुछ अलग सा है, इंटरेस्टिंग है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी. यू शुड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. डोंट Yeah. जस्ट रीड टू रीड और डोंट जस्ट रीड टू फ्लॉन्ट. मजा आ रहा है बुक में, 15-20 पेज पढ़ के तो आगे बढ़ो. तुम्हें नहीं जम रही 10 बुक में, 10 पेजेस में, जैसे अभी तुम्हारे साथ इस बुक के साथ हुआ, नेवर शट अप या डोंट शट Don't अप, shut व्हाटएवर up. द Yeah. नेम इज. तो तुमने छोड़ दी, हाँ. कोई बात नहीं, छोड़ दी तो, क्योंकि इट डिड नॉट सूट यू. तो Yeah. ऐसी कोई बुक सूट करेगी तो तुम्हें कोई बोलेगा नहीं. यू विल फिनिश इट Hmm. ऑन योर ओन, चाहे तुम कहीं भी प्रॉब्लम में हो. यू विल रीड इट एनी हाउ. तो फाइंड योर टेस्ट एंड वंस यू डेवलप इट, इट्स ब्रिलियंट. सो जस्ट चूज एंड पिक. नहीं काम करता है तो मूव अहेड. इसीलिए भी आई ऑलवेज टेल पीपल कि भैया खरीदो मत, किसी दोस्त के पास है तो बोरो करो. हाँ. इफ यू लाइक इट आगे बढ़ाओ, नहीं आती है पसंद तो वापस करो, एंड देन यू डोंट इन्वेस्ट टू मच. That is my Hmm. opinion. But Khushwant Singh, Sadat Hasan Manto, to cut short, And and Premchand. Premchand, translated पढ़ सकते हो, मजा आएगा. Yep. पर मैं लूंगा एक प्रेमचंद. I'll read. और I just found that title Train to Pakistan pretty interesting. मैं. Hmm. It's very good. It's very good. Yep. ऐसे Hmm. आपने भी बोला that you don't believe in lot of religious stuff. That just caught my attention. I just wanted to know what was your opinion about the, recent Ram Mandir, inauguration, very large, that happened on a very large scale. Here it did not, मैंने अभी, यार वो अभी politically. तुमने लास्ट वो कुछ डाला था ना, उसका सामवेद गौतम ना, हाँ जी. मुझे उसका नाम याद आ रहा था, पता नहीं मैंने उसको पढ़ाया है शायद, पता नहीं, या He's कभी 1 year junior सब्स्टिट्यूशन to में me. देखा होगा. हाँ तो मैंने उसको पढ़ा है पक्का, मैंने पहचाना भी उसकी शक्ल. बट आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड बाय हिज अटायर. ठीक है, इट्स Yeah. हिज पर्सनल चॉइस, बट वो जो थंबनेल मेरे सामने एकदम से आया तो इट वाज थंबनेल ही बोलते हैं ना हाँ उसको. जी, हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, He's करेक्ट मी इफ too आई एम रॉन्ग. deep, and he is too ओके. deep, and वो उसका बहुत नेचुरल है. जैसे कई लोगों का लगता है ना कि बहुत ही जस्ट टू हाँ. डिस्प्ले, हम्म. फ्लॉन्ट कर रहे हैं, या कि सिर्फ हम्म. दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम 4 बार पूजा. हम्म. ही इज अ जेन्युइन डिवोटी. ओके, ठीक है. मतलब मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था ऐसे देखना, बट ठीक है, ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे हिज पर्सनल चॉइस, आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट. लेकिन ठीक है, राम मंदिर के बारे में तो क्या बोलूं. ठीक है, पीपल आर हैप्पी, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. आई एम हैप्पी दैट द पीपल आर हैप्पी. एंड उसके बहुत हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं, बहुत वास्ट हिस्ट्री है. हमें 10 पॉडकास्ट लग जाएंगे उस पर बात करने में. सो आई वुड जस्ट से पीपल आर हैप्पी. वैसे भी आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, सो आई एम नॉट
into that. It's not that I am against that, but it's that कि it doesn't really give me a push कि मुझे वहां जाना है या मेरा कुछ ऐसा एम है. अगर मैं कभी कहीं घूमने गया वहां पे तो ठीक है मे बी, बट इट्स लाइक कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, एंड इट्स गुड दैट द पीपल आर हैप्पी. ठीक है, Yeah, टूरिज्म बूस्ट होगा, कुछ पॉजिटिव्स है उसके. we'll get employment. राइट, व्हाई नॉट. Yeah. So, मतलब you consider yourself as an atheist. Not consider, I am an atheist, You yes. are an atheist. Right. Wonderful. So, ऐसे, what do you think makes you more different, or what are the benefits that you think? एक तो ऐसे initially I was also too atheist. I'm a believer now. I was very atheistic before. Okay. But एक logical, rational thinking होती है when you are as a not a full devotee. I feel that is what I feel. What do you think are the differences between you and the rest? So matlab you are admitting now that you are I'm a a believer. believer, so I'm a believer. so you are no longer a person who's going by logic and rational. No. I believe in the existence of God, but the mindset Okay. जो मेरा पहले था, that Uh-huh. stays the same. I personally Okay. feel that there's a supernatural power. I don't believe in Okay. any particular Okay. God. I just believe that there is a power beyond science. Mm-hmm. That's what my take is. Rest, I have the same views that I had before. Mm-hmm. It So just what do you happened want me to say? naturally. What did you ask? I wanted to ask कि आपको क्या लगता है, what are the differences between you or the people who follow religion, who are true devotees, difference between an ठीक atheist है, and a devotee? बहुत सारे हैं वैसे तो, but I would first say the most basic one. Devotees, they don't question, and atheists, of course, they have a lot of questions, and then of course, again, see, there has to be a difference between faith and belief. For example, we know that something exists. For example, let's say Newton's laws of motion. So they can be proved, right? They have been proved. And there are a lot of theories and things that have been developed on the basis of these laws. तो अगर मुझे जिद है उसकी तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ या किसी की हेल्प लेके उसको देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ. बट देन फेथ, it's highly illogical in my opinion. You know it cannot be proved, but you feel it is still there, and still you are like getting desperately after that कि ये तो है, because हमें लगता है. But लगने से अगर होता है, so that is the difference which actually makes me very uncomfortable sometimes. You know कि you cannot prove it, but you feel ऐसा होता है, तो you're just going after that. That is the thing. So ये तो बेसिक चीजें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट. क्वेश्चन करना सिखाता नहीं है मे बी फेथ, और यू जस्ट स्टार्ट विद दैट कि आपको क्वेश्चन नहीं करना है, मान लेना है, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे. तो वो प्रॉब्लमेटिक लगता है मुझे. That makes sense. मेरे को इससे एक ऐसे बहुत ही फनी एग्जांपल याद आया जो आपने क्लास में शेयर करा था. बहुत ही फनी था मेरे को. ऐसे बहुत आई एम सो ग्लैड कि तुम्हें एग्जांपल याद है कोई. ओके, आई एम हैप्पी. यस. एक बहुत ही जनरल होता है ना कि व्हेन अ बुक फॉल्स डाउन इन अ क्लास और किसी का बैग पे पैर लग गया, we'll just touch it on a forehead, right? आपने कहा था like why do you touch it? Just a general question in class. सबने बोला बहुत नेचुरल है, वी बिलीव इन दिस एंड दैट. आपने कहा अच्छा, डू यू कंसिडर योर पेरेंट्स एज अ गॉड और यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, राइट? जब वो गिर जाते तो उन्हें क्यों नहीं छूते ऐसे? ये तो सोचने की बात है. हाँ, right. I was trying to push all of you to think. Yeah. मतलब it was not my motive कि मैं किसी को एथीस्ट बना दूं या मुझे कुछ प्राइज मिलेगा उससे, but because ऐसे भी देख the सकते हैं purpose इस of चीज को. education is same. The purpose of education is same. You have to question. And see, at the Yeah. end of the day, I think it's a matter of conditioning. क्योंकि while my child is growing up and I tell my child कि भाई वहाँ पे जाके हाथ जोड़ो, वहाँ पे चप्पल उतार के जाओ, या फिर you do that, you do this, that is conditioning, and she grows up with that part of her brain disabled already, when I could have given her a chance to think कि कुछ होता है कि नहीं. So that is again a problem कि आप कंडीशनिंग कर देते हो, फिर उसके बाद उसको बोलते हो कि हाँ है, तो वो मान ही लेगा है. क्योंकि
बच्चा तो बहुत सारी चीजें पूछता है, वहां पे उसको कंडीशनिंग नहीं करते। करियर में हम उसको बहुत सारी चॉइसेस देते हैं, लेकिन भगवान में नहीं देते। वी जस्ट टेल कि होता है, वो मान लेता है। तो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी पर्सनली। दैट्स अ डिफरेंट वे टू लुक एट इट। हाँ, ये सही बोला ऐसे कि करियर में हम उसे चॉइसेस नहीं देते। करियर में तो या तो इंजीनियर या डॉक्टर ऐसे कर देंगे एंड जस्ट बिलीव। इंटरेस्टिंग। यस। या मेरे को एक क्वेश्चन और था कि जैसे अर्लियर यू वर सराउंडेड बाय द यंग इंडियंस एंड नाउ यू आर सराउंडेड विद द एक्सपीरियंस्ड वंस, ठीक है? ऐसे एंटरटेनमेंट लेवल तो ड्रॉप हुआ होगा ऑब्वियसली, बहुत ज्यादा। नो बट डाउट। brainstorming would have been, I for me, people there up in the defense ministry would be, you know, highly intellectual types and they just think very straight to the point. तो वो क्या difference था मेरे को? Things that genuinely you love as your current profession. एक्चुअली इसमें लैंग्वेज का कई बार इतना डिफिकल्ट सिनेरियो क्रिएट हो जाता है दैट यू हैव टू find out a solution, and there's no other way about it. You have to find a solution because there are some special documents that have to be translated and they have to be precise. But then, for what word are you using a different word in some other language? तो ये कभी कभी चैलेंजिंग होता है sometimes, which is quite rewarding as well. लेकिन डिफरेंस तो है because the nature of job is different. सिंपल है, बेसिक टेनेट तो वही हो गया कि भाई टीचिंग इज entirely different, and then you are struggling with the language sometimes you are flowing with it. It's altogether a different thing, and of course nothing can match the vibe of young students, because sometimes they push you. There are challenging questions, there are challenging situations, rather, I would say. You're teaching a class of 40, and then there's someone very interesting like Akash Tyagi, or you have to manage the class, the lesson plan, and that nice fellow Akash Tyagi as well. तो ये है ना, ये चैलेंज अलग है। यहाँ पे वो चैलेंज नहीं है, यहाँ पे दूसरा है। या fighting for your promotions, you're fighting for your job, and this is how you carry on. But interesting way to look at it. You have asked it, so I'm thinking now in that direction. Ki, okay, what could be the differences? No, Nice. I'm like, हाँ चलो, वो आदमी वो बंदा हर टीचर को याद रहने वाला है, आई फील। हाँ, ऐसा होता है। सी, नामों में भी यही होता है कुछ। आई रिमेम्बर अगेन बिकॉज आई कीप गोइंग बैक टू स्कूल, क्योंकि वी आर कनेक्टेड थ्रू दैट, कि कभी कभी मैं किसी बच्चे का नाम लेता था आउटसाइड व्हेन वी मेट। दे फेल्ट वेरी हैप्पी। वो किसी भी टीचर के साथ होता है, कोई टीचर स्पेशली जब बच्चे उस टीचर को पसंद करते हैं एंड दैट टीचर टेक्स देयर नेम, तो बच्चों को लगता है अरे मैम को या सर को मेरा नाम पता है। बट टीचिंग 5 sections of 40 students each, sometimes it can be difficult, या टाइम लगता है सीखने में, आपको सबके नाम याद करने में। बट ये होता है कि दोज हु आर वेरी ब्रिलियंट, या फिर दोज हु आर क्वाइट आउट ऑफ देयर प्लेस समटाइम्स, उनका नाम आप ऑफ कोर्स आप याद आराम से कर सकते हैं। या दोज हु आर आंसरिंग अ लॉट इन द क्लास, और दोज हु आर स्टेइंग एक्टिव इन द क्लास। ये तो है एक चीज। तो इसलिए मुझे आकाश त्यागी का नाम एकदम से क्लिक हुआ। ऐसे आपको कौन कौन से याद है? ये जस्ट लेट इट बी रादर देन बीइंग जनरलाइज्ड, ये एक्सक्लूसिव फॉर आवर बैच। आपको हमारे बैच से कौन कौन याद है? कौन कौन याद है मतलब, ऐसे तो मुझे बहुत सारे नाम याद है। जैसे कि मैं तो क्लास टीचर था एक ही क्लास का 3 साल के लिए ना, फॉर 3 consecutive sessions, सो या आई रिमेम्बर ऑलमोस्ट आई थिंक ऑल द नेम्स। हालांकि ये होता है कि मैं किससे टच में हूँ किससे नहीं, उस पर डिपेंड करता है। बट ऐसे तो फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने तुम्हारी क्लास से नाम बोले, जैसे कि आन्या से भी मैं टच में हूँ। आई कीप लुकिंग एट हर स्टेटस अपडेट्स एंड ऑल। हिंदू कॉलेज में है शायद वो, या एंड शी वाज आल्सो देयर ना ऑन योर ऑन द पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। या हाँ, एंड देवा थी, कृष्णा मुझे याद है, कृष्णा की सिस्टर भी थी, पता नहीं उसकी जूनियर थी कि सीनियर थी। आई रिमेम्बर बिकॉज आई टॉट हर एज वेल। एंड एक तुम्हारी क्लास में क्षितिज था शायद। शिति। ओके, नहीं क्षितिज, ओके क्षिति, यस। ऐसे तो अभी तो इट्स डिफिकल्ट। हाँ, आकाश त्यागी तो ठीक है। एक मेरी क्लास में आदित्य त्यागी था। या हाँ, ही कुछ वाज द बहुत मिस्टर स्पेशल बच्चे। फेयरवेल ऑफ आवर बैच। ओके, एंड शिवांश ऑफ कोर्स माय फेवरेट। एंड आई रिमेम्बर कुछ और भी बैचेस थे। एक 8F एक क्लास हुआ करती थी, आई थिंक आफ्टर यू। उसमें उदीक्ष, सुवीर या कौल एंड दीज
वो class was one hell of a ride, if I could use the expression. And I remember every teacher, when they used to come out of that class and in the staff room, that class was the hot topic, hot discussion. It was always in the center. So I remember some English teacher just telling me I cannot handle this class anymore and it's not possible for me. So I was there and I said, okay, let me take up this challenge. I'm going to deal with this class. I would love to meet this class. I went there and I became very good friends with them. And I'm still in touch with many of them. And it was a brilliant class, mind you. But of course, the energy was different. Yeah. So I remember quite a few names, but I have to think about it because it's been 3.5 years or so. So yes. ब्यूटीफुल, बहुत कर ली ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेट्स जस्ट चिल. मेरे को जानना है आप कहाँ कहाँ घूमे हो. यू हैव नेम्ड ऐसे लिस्ट ऑफ प्लेसेस जो Right. बहुत सारी है. एंड Hmm. आई 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 लव्ड गोवा. आई लव बीचेस. ओके, आई हैव बीन टू Hmm. माउंटेन्स बट Right now you're in Chennai. या आई हैव बीन चेन्नई. Acha, okay. हाँ, so Pondicherry is like 50 minutes away, Hmm. 1 hour, Hmm. 1.5 hour away from my place. Hmm. Pondicherry is Hmm. beautiful. Have you been there? I've heard. I plan to It's visit. like South Goa vibes, Hmm. 10 times cleaner, and a lot of French culture. It has, French, yes, because yeah, it yeah, was a French colony, right? colony, right? Hmm. Yeah, yeah, yeah. Hmm. So Hmm. ऐसे in India, पहले बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है that you plan to go after for a break? Is it like 6 months of work? एक आदमी को रेस्ट चाहिए होता है. There's one place that the person resonates with कि हाँ मैं यहाँ जाऊँगा भाई. See, I think it would be Goa for me. I've been to Goa thrice already. It's not that I can go every 6 months, but whenever I get an opportunity, I would love to travel to Goa again and again. I don't know. There's something there, something special, something magical. अभी November में मैं गया था, and it was very special because I took my daughter with me. It was her first flight actually. And that was my status caption as well. It Yeah. was her first flight and I really enjoyed there with her. So Goa मुझे बहुत suit करता है. I think it's very charming. It has so much to offer to you and you can do what you want. It's amazing. It's beautiful. I would love to travel to Goa every year if I can. Goa is a fun place. You can have fun. Mm. You can have fun in the north and just chill in the Mm. south, relax. Mm. ऐसे राइट, ये भी हो सकता है कि अभी इंडिया एक्चुअली बहुत बड़ा है. इट्स मैजिकल इन इटसेल्फ. बहुत वैरायटीज हैं. अभी मैंने इंडिया बहुत डीपली या बहुत अच्छे से डिस्कवर नहीं किया. हो सकता है कोई बेटर जगह भी हो, बट टिल नाउ आई थिंक गोवा. yeah. ऐसे आपने बताया ना you went first time with your daughter last time. ऐसे what was the difference ऐसे when you used to travel alone and now with family? क्योंकि उसमें There's a lot बहुत of difference difference. है. Lot of difference because पहले I did not have to think कि where am I going, how am I going, when am I going to come back, what am I going to eat, what am I going to drink. But now everything revolves around my little one. So किस टाइम जाना है, किस टाइम आना है, कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ नहीं, क्या खा सकते हैं, and everything has to be planned accordingly. And if she's enjoying, if she's happy, then we are happy. Otherwise, it doesn't make sense. So it has changed completely. Yes, of course we enjoy, and it's a change for us as well. But yes, definitely it's a big change. There's no The doubt about that. the responsibilities go high. Right. And maybe when she grows up and then we travel, perhaps it would be easier. But Makes sense. And mm, you also told me you've traveled abroad. You've traveled mhm, a lot of Europe, Luxembourg, then mm, Belgium. ऐसे mm. आप वो and what place do you like the most? Like the most जो आपको ऐसे सबसे पसंद आया जो आप घूमे. See, Paris, though, of course, is a dream city. Dream city का मतलब ये है कि it's altogether different. है Yeah. ना? आप लगता है आपको कि आप हो कहीं पे in the center of the world. And Paris also happens to be the most visited city in the world. And now it's going to host the Olympics as well, especially for its cuisine. It's brilliant, and its streets, you just can roam around there for hours and hours without getting tired. But there's this place called Bruges. It's in Belgium. That would be my favorite. It's like Venice, not exactly like Venice, but because there are canals and there are places and forts and houses, old structures, European architecture. So that is the place that excited me the most. I loved that place and I think I've been there twice. But it was really
Beautiful. Bruges, I think, in Belgium is the best thing. And apart from that, the food that actually creates a lot of memories. That is my Hmm. say about that. Bruges in Belgium is my favorite. If you get a chance to go to Europe anytime soon, you have to visit Belgium. For sure. But ऐसे, what is your dream city that you want to visit? It's London, and It's it's same, same. okay. Yeah. The reason for London is because I've read quite a lot about it because I was a student of English literature. So many authors, and the center of English literature has been London, of course, that being the capital as well. Very important business port city as well. तो वो सब है उसकी वजह से कुछ है मुझे कि मुझे एक बार लंदन तो जाना है एंड यू आई एम श्योर यू रिमेम्बर भूमिका मैम Yeah, yeah. one who used to teach maths. So she was in London recently. And of course, I'm in touch with her. So I was a bit jealous and I told her that I couldn't go, but you have been to London. So I Yeah. would definitely like to go to London. And I hope it is happening soon. I hope it happens soon, maybe by the end of this year. But that By is, God's grace. uh, yes, or by reasons of my hard work's grace. And so I hope to go to London soon. Yeah. I personally resonate. It's just portrayed कि ऐसे Hmm. London and New York. New York also fascinates me a lot because about from Columbia University. Columbia University just fascinates me. I don't know why. So I'm like full city vibes, everything happening, just work. हाँ बिल्कुल of course. हाँ, work till 5, 6 जब तक तुम्हें काम करना है. How rest करो, party hard. Because similarly, when I visited Bombay this year, I visited Mhm, Bombay for the first time. I felt mhm, जो कहते हैं ना city of dreams. It is actually mhm, true. It's like mhm, तुम सुबह जाओ, it's mhm, everything so lively in the morning also. You go, you mhm, work till 5, 6, come back, mhm. rest, then party till 3. You can work, party, Mm. rest, chill at the same time in the same city. It's altogether different, right? I get it, and I can feel the excitement in your words. Yeah, Mm. and that's something that I would love to do once I Yes, graduate. definitely, definitely. Traveling and reading, I'm sure, till this age of mine, I've learned these are the things that can teach you the most. Traveling and reading, Yeah. and you have to do that. There's no doubt about that. Yup. I also love traveling. मेरे को Hmm. ऐसे hill stations just calm me down. Hill Hmm. station, like people ask you're a beach person or you're a mountain. Slightly towards beaches, but I also love mountains. I cannot neglect them. हाँ ठीक है क्यों एक चूज करना है हमें हाँ, we can choose both as well. हाँ. Similar thing That's right. happened with me in Manali. ऐसे I had traveled to Nainital, Mussoorie, all Okay. the hill stations. But Manali Okay. जाके जो vibe आई, was like Mm. full, very nice. I traveled with my family and it was something like it's just too lively. ऐसे It right is. now where I am, there's nothing Mm. too much happening. I'm also like 1.5 hour away from the city, so it's Okay. and everything shuts after 9. मैं वो बंदा हूँ जो Mm. घर से निकलता at 11 o'clock just to have a walk with a friend. Mm-hmm. ऐसे and I'm like shit, I'm missing this. So I know, happens. yeah, a place I Mm. believe shapes a personality काफी हद तक. No, there's no doubt about that. That's right. Hmm. I Oh, agree. yep. I also wanted to ask ऐसे what were the cultural differences जो आपको लगे कि मतलब culture तो पूरा ही different है but something जो आपको काफी अच्छा लगा about culture of the Europe, They about stay France. free. Yes. I think they stay not aloof but free. There are less insecurities, I would say. There is less control, and less control का मतलब है कि children are becoming independent Hmm. and ज़्यादा किसी का life में interference, the lack of Yeah. interference, which is very good, वो है जो कि इंडिया में नहीं है because of obvious reasons, because our society has been different और यहाँ पे भीड़ बहुत है ना, तो वहाँ पे people are into their own. I of course think कि sometimes it can be a problem, but usually that is the case. They stay at peace. उनके लिए that is the most important thing. एक Hmm. इंटरेस्टिंग चीज वहां पे ये हुई, आई वाज बिकॉज विद द स्टूडेंट्स, इट वाज 2019, आई वाज 26, I was of course not married by that time. I was buying some candies at a store and I bought a lot of candies for my nephews and for
my niece, etc. So this young French student, he asked me, "Oh, you have bought a lot of candies." I said, "Yes." So the next question was, "Okay, are you married?" Oh, no, no, sorry. He asked me, "Oh, these candies must be for your kids." So that question was a bit surprising for me. I was like, "No, I'm not married yet." So when I said I'm not married yet, I still remember the expression. The student, the French young student, was a bit surprised that what is this person saying? Yeah. Same day, I was invited for a dinner by a French teacher at her place. I went there. I came to know that she's not married. She has 3 kids and they live together. So then I understood, okay, why was that French student making a face? Because for them, kids can happen before the marriage as well. Of Yeah. course, because that's biology. But here in our culture, it's very strange. Yeah. It can be a big problem. You can be ostracized as well if you do that. तो Yeah. वो एक cultural shock था because I was traveling abroad for the first time. It was, I won't say it was a learning, but it was a cultural shock, but it is how it is. और वो चीज़ वहाँ पे थी तब मुझे लगा कि उस बच्चे को फ्रेंच बच्चे को क्यों अजीब लगा बिकॉज उसने इंडिया ट्रैवल नहीं किया था डिड नॉट नो अबाउट इंडिया बट मेरे लिए भी वो था तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है बहुत लोगों को बताता हूँ एंड दे से कि हाँ यार ये तो है उनका है तो है क्या कर सकते हैं these are the things and that's why it is very good for young people to travel तो उनको पहले ही पता हो जाता है कि भाई बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में मतलब ऑल बहुत अराउंड द कुछ हो रहा है वर्ल्ड दुनिया में, हाँ. हाँ नहीं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बट जैसे आपने बोला ना कि दे हैव किड्स बिफोर मैरिज, मेरे को याद आ गया ये इंसिडेंट फ्रॉम जोक फ्रॉम बेफिक्र. आपने देखी है? रणवीर सिंह. मैंने देखी नहीं है I've heard the songs but not the film या सो इट्स अबाउट दिल्ली से रणवीर सिंह मूव्स टू फ्रांस फॉर वर्क एंड ही इज अ स्टैंड अप हम्म कॉमिक देयर एंड ही सेज दिल्ली में बहुत कलेश होते हैं शादी के लिए, लाइक 26-27 के हो जाओ, माँ बाप कहते हैं शादी कर लो फिर बच्चे कर लो. हम्म यहाँ का सेट है, ही इज इन फ्रांस, इज लाइक यहाँ का बहुत सेट है. यहाँ पे शादी पे क्या होगा, एक लड़का होगी, एक लड़की, एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, एक लड़की का कुत्ता होगा और एक बच्चा जो उनका पहले से ही हुआ है. कोई स्ट्रेस नहीं है right उन्हें. right Like, they accept that there's no problem तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हाँ. हम्म, ये जॉइंट फैमिलीज में ना रहना अलग रहना तो दे थिंक डिफरेंटली ठीक है अपने अपने वो है ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्लेम करें कि उनका बेटर है कि हमारा बेटर है This, बट उनका है तो हमारा हमारा है या ये दे है हर एक का अपना अपना तरीका होता है जीने का. जीने दो और खुद जियो एंड जीने दो हाँ टाइप्स. आई आल्सो सो बिलीव इन दैट. they choose what they want it's as simple as that Yep. Okay. Final thing I just wanted to ask, and I was super curious about. I had also seen on your status. What is mm-hmm. Indo France? Okay, so this is a company that we have started. It's called French Into Travels Private Limited, and we have 2 directors. One director happens to be my wife, and the other one is our friend from France. He's like a family now, and he's the other director. So we had this idea in 2020, but then COVID happened. We wanted to launch a company that serves as an intermediary, or let's say a bridge between 2 schools, one which happens to be in India, somewhere in India, anywhere in India, and one which happens to be in France. So we arrange all the logistics and MOUs and all the understandings and payments and everything between 2 schools. And then schools can conduct their business. The Indian students can travel to France. The French students can travel to India and along with them, of course, the teachers. So we wanted to start it in 2020, back in 2020, but then, of course, pandemic happened, and finally we started this company last year, 2023, in February. So it's been a year or so, and we have already completed one cycle, and we are in the middle of the second cycle. Here we are doing with the DPS Siddharth Vihar, and last year some students went there, and coming May, again, some students will be going to France. So this is how we are keeping ourselves busy, and it is quite rewarding, quite interesting, because again, then you get to travel again and again to Europe with that. No, but is this specifically for only schools or any individual student? For example, अगर मेरे को जाना है, so would Uh-huh. you be? Is there any provision or any kind of service that you also provide? See, the thing is, ki we are
sometimes we are working like a travel agency, but it is not exactly a travel agency because travel agencies तो बहुत है. You just book your tickets, you give some money, you get a package, you go to France or anywhere in Europe, and you come back. हमारा ये होता है कि we want to make it fruitful and we want to give something to learn, जिससे कि वो एक्सपीरियंस अलग हो. अदरवाइज तो कोई ट्रैवल एजेंट भी कर सकता है ना, वाई अस. तो हम बेसिकली स्कूल्स ही टारगेट करते हैं कि स्कूल का एक बैच जाए एंड द स्कूल कम्स बैक. किसी को कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए about anything, we can do that. We take the college tours as well. For example, right now we are talking to a private university in Noida, and we are going to take a group to France. What they want is industrial visit because their course demands that. It is called international immersion. It's not exactly an exchange program, but that would help them for their placements. So they'll be visiting a lot of places in France, including the industries and factories, which would of course give them the exposure to move ahead in their careers. So these are the things that we are doing right now. As a company, we are very young, and I'm not allowed to be an official part of that because I'm a government servant, of course. So, but I know the things, so I help, and I don't get anything in return, of course. Just a few flight tickets. But it is interesting, and with time, I think we'll discover more, we'll explore more, and more opportunities. So, एक, what's your vision for Indo France? विजन एज सच तो हम कोई शार्क टैंक वाले नहीं है, बट विजन ये है कि पकड़ा गया मैं. विजन, हालांकि मैंने शार्क टैंक आज तक देखा नहीं है, बट You haven't? आई कैन इमेजिन, नो नेवर, बट आई कैन इमेजिन कि वो किस बारे में होता है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द मीम्स एटसेट्रा. Yeah. और एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं सोशल मीडिया पे कहीं हूँ नहीं, तो कहीं इधर उधर स्टेटस पे किसी के दिख जाता है, तो आई गेट एन आइडिया. विजन ये है कि वी वांट टू कनेक्ट मोर एंड मोर स्कूल्स because cultural exchange program is a very brilliant idea. It's beautiful. क्योंकि वो इसलिए beautiful है because these cultural differences they are there, but आप उसको पढ़ के या देख के फिल्म्स में नहीं समझ सकते. You have to explore that. And जब एक young student उसको explore कर लेता है, so I feel कि वो better prepared होता है for the life. अगर मैं वही चीज 25-30 साल की एज में बाहर जाके देख रहा हूँ और मुझे एक शौक लगता है और मैं सीखता हूँ कि अच्छा ऐसा भी होता है, इट चेंजेस माय माइंड. इमेजिन अ 14-15 year old growing student learning that at that age, and what would be his or her thinking when he or she turns 50, 25 or 30. तो वो maturity level अलग होगा. So I want more and more students to explore that. Till now अभी तो यही है, बहुत simple सा है, but it's quite noble, I would say. No, Hmm. gaining exposure is genuinely way important. Maybe I Hmm. also came too far. वो तो मैं जोश में आ गया. But Mhm. the amount of exposure that you get in a university, which is not in Hmm. your state, city छोड़ो, Mhm. state में भी तो नहीं है, Mhm. वो बहुत different होता है. You I get get to it. interact with people from a lot of, cities all around India. और मेरी यूनिवर्सिटी में around the globe भी है बहुत सारे. There are a lot of South Africans here and, get to learn a lot Of about them. course. बहुत इंटरेस्टिंग होता है और ये बहुत अच्छा पॉइंट है. ऐसा ही है, इंडिया तो इतना बड़ा है, तुम गाजियाबाद से चेन्नई चले गए हो, यूरोप में तुम्हारी 2-3 कंट्रीज क्रॉस हो जाती है इतने डिस्टेंस में. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज ट्रू, इट हैपेंस. Yep. Okay. Last, final. I just ओके. want to end this on the thing like, what will be your advice for people listening or students listening? Because mostly students would be listening to this. What would be your advice for students? Travel on every opportunity that you get, be it domestic, be it in the other city, other district, or international. Read good stuff, watch films, they are important as well. एंड रीड गुड स्टफ से मेरा मतलब है ट्राई टू रीड क्लासिक्स. ठीक है, ट्राई कर सकते हो आप, पसंद आती तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, इट्स ओके, मूव अहेड, डोंट गेट स्टक, डोंट हैव टू मेनी रिग्रेट्स. बाकी तो आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने बोल दी है, रीडिंग एंड ट्रैवलिंग. And keep trying, and hard work pays off, and be logical and question the things, the most important part. It's not only about the religious thing or whether there is some power that exists or not, but if you question, that would be like the icing on the cake if you're doing everything else fine.
बाकी तो everything will fall in place. और that is that. Don't get influenced easily by other things. जो मैंने बोला है उससे भी नहीं. You have to find your own spot, your own things कि क्या ठीक हो सकता है क्या नहीं. This is how we move on. Simple है. अभी तो मैंने कुछ बहुत ऐसा अचीव नहीं किया कि मैं एक बड़ा अच्छा सा आंसर दे पाऊँ. But whatever little I know, I can of course share that because you have asked that. That is the only thing. Have fun. That's just more than enough. Also, The if students will say वो तो हम कर ही रहे हैं of course. What's new? नहीं, Right. but हाँ, that is true. मजे करो लाइफ में. That Hmm. works. No Just doubt. wanted to ask कि अगर किसी any student from our batch or any other batch you thought wants to get in touch with you, how can he get? They can take my number from you. Sort आप social media पे कर लो, but Uh, मैं व्हाट्सएप पे हूँ और मैं वो एक तो सोशल मीडिया है व्हाट्सएप पहली बात. दूसरी बात यूट्यूब पे हूँ. यूट्यूब भी मुझे कभी कभी स्क्रॉल करना बहुत खराब लगता है बिकॉज इट्स रैंडम स्टूपिड वीडियोस प्लेइंग. और yeah. रीजन वही है. मैं करता था इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह यूज बट दैट वाज लॉन्ग बैक. मुझे फ्रूटफुल नहीं लगता. आई राइट blogs sometimes but वो भी बहुत कम हो गया especially when I came here because we don't have access to internet here in our office because of classified stuff. तो वो कम हो गया बट आई डू राइट ब्लॉग्स. लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है टेक्स्ट मी और कॉल मी बिकॉज आई लव टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स. मुझे ऐसे रैंडम टेक्स्ट किसी बच्चे का आता है तो दैट एक्चुअली मेक्स माई डे. तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई एम लिविंग इन गाजियाबाद. आई एम लिविंग इन वसुंधरा. कभी भी मिल सकता है कोई भी. Sorted. Thank you so much, sir, for doing this. इट वाज अमेजिंग अमेजिंग ब्रिलियंट. मुझे कितनी देर हो गई हमें बात करते हुए? 1 hour से ऊपर ही हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया. इट सवा वाज घंटा. I would say it was amazing, interesting, and especially जब मुझे कुछ चीजों के बारे में सोचना पड़ा. I was not expecting that. I'm glad. But I had to I had to make some comparisons. I had to deep dive into the past और कुछ answers ऐसे निकल के आए surprising जो मैं भूल ही चुका था. Because you have to think about that. I'm not in touch because. But interesting and you're doing great. और I'm looking forward for your next episodes. और बहुत मजा आया मुझे तो. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone, for listening to this point. We'll meet next Wednesday. See you. Thank you so much for listening till this point. If you've liked the conversation, I believe you've loved the conversation. Do not forget to hit the like button, share it with your friends and family. Comment down who do you want to see next as a guest on ThoughtCast so we can spam his or her DMs. And that's it from my side. I'll see you next Wednesday at 12 p.m. Bye bye.